अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। संडे विद शिफाम लाइव हम आपको ला रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर कासिम, आई होप यू आर वेल। कल हमने बात करी अल्जाइमर्स की और आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस की। लेकिन हम क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं आपको कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ये डिसऑर्डर्स क्या हैं और हम इनके बारे में किस तरह आगाही फराहम कर सकते हैं। सो बिफोर वी गो इनटू the depths of Parkinson's with डॉक्टर स्वेबा अजीम, जिन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला है संडे वाले दिन। जैसे कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि डॉक्टर्स को मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनको थैंक भी करती हूँ, क्योंकि संडे वाला दिन एक दिन अगर उनको मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ या कुछ घंटे मिल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वो भी वो अपना वक्त दे रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन बांटने का, आपको समझाने का, आपसे सवालात पूछने का और उनके जवाबात देने का। उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि शिफाम और वन हेल्थ ने साथ अपने एफर्ट्स को जॉइन करके आपको घर पे फ्री कैल्शियम और फ्री ब्लड शुगर टेस्ट ला रहे हैं। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट 0304117428 अगर आप घर से सैम्पल्स अपने कलेक्ट करवाना चाहते हैं, जो 50% डिस्काउंट एंड फ्री इस वक्त दिए जा रहे हैं। सो कॉल फॉर योर वाउचर और अपना वाउचर ऑब्टेन करें 0304117428 पे। नंबर्स आ जाएंगे स्ट्रीम के नीचे। लेट्स टेक डॉक्टर स्वेबा विद अस लाइव ऑन स्ट्रीम एंड आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड स्वेबा को इंट्रोड्यूस करते हुए, बिकॉज स्वेबा एंड आई गो वे बैक एंड आई फील इतनी प्राइड जब मैं यंग डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, हु बिकम स्पेशलिस्ट इन द फील्ड नाउ, एंड वो अपने मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग आउटसाइड, दे नो दैट बाहर उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, अपने शहरियों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं। सो spotlighting Dr. Sweba Azim, and she is a neurologist and a neurophysician, and she will introduce you to herself in a second. Assalamu alaikum, Sweba. How are you? Walaikum assalam, Rabia. I'm fine and doing well, and I'm loving the fact that I can, have a discussion with you and help people with whatever queries they have about neurology. So, yeah, I'm Dr. Sweba Azim. Absolutely. Yes, and I'm a neurologist. अच्छा, राबिया ने कहा था कि बताएं थोड़ा सा कि न्यूरोलॉजिस्ट होता क्या है। हम जिस चीज़ों में डील करते हैं वो रिलेटेड होते हैं दिमाग से, आपकी स्पाइन से, आपकी नर्व्स या नसों से, एंड इवन योर मसल्स या पट्टे जिसको हम कहते हैं। तो हम बहुत सारी डिजीज़ेस को देखते हैं। सबसे कॉमन जो होते हैं वो स्ट्रोक्स होते हैं, एपिलेप्सी होता है। अब अगर से हम थोड़ा सा और जाएं तो पार्किंसंस जो हम आज डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स। पार्किंसन इज जस्ट वन, देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स दैट वी डील विद. And then we have other diseases which, again are chronic diseases like multiple sclerosis. Then we have neuromuscular diseases जो आपका neuromuscular junction होता है. Then we have muscular diseases, myopathies. So we deal with a lot of diseases. It's just not about the brain, or it's just not about the spine. So yes, we do have a large range of diseases that we deal with, and a neurologist या दिमाग का डॉक्टर जिसको हम उर्दू में कहते हैं deals with all of these. एंड स्वबा, जैसे ही दिमाग का डॉक्टर की एक लेमैन को या आम इंसान जब सुनता है कि भाई दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, एक इंस्टेंट एक फियर और एक डर सा महसूस होता है जिस्म में कि उफ, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारे साथ क्या जहनी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। और जब मैं लोगों को आगाही दे रही होती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी या फ्लू है या कोई इस तरह की कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। अगर आपको आंखों की कोई बीमारी होती है तो आप ऑप्टिशियन या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गुर्दों की एंड इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स की। तो अगर हम दिमाग के डॉक्टर को नॉर्मलाइज करें थोड़ा सा, कि हम अपने हम वतनों के दिमाग में से ये डर निकाल लें कि एक जहनी डॉक्टर को देखना या दिमागी डॉक्टर के पास जाना कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज
एक्चुअली लोग जो दिमाग के डॉक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं ना, वो बहुत सारी सीरियस डिजीज एसोसिएट करते हैं, लाइक स्ट्रोक, कि अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो फिर वो तो बिस्तर पे आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता, या अगेन मिर्गी, एपिलेप्सी. People get scared basically because the diseases associated with neurologists seem very scary. और दिमाग, like I feel हम खुद एज न्यूरोलॉजिस्ट हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता दिमाग के बारे में. इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ सो वास्ट कि हम भी कहते हैं कि we probably know like 30% about the brain, maximum 40%. So for if we as people who have studied the brain for the last say 10 years of our lives, if we feel that way, so it is a challenge to convince a layman. मगर having said that, there are lots of ऐसे मसले होते हैं न्यूरोलॉजी में जिसकी बहुत आसानी से ट्रीटमेंट होती है और पेशेंट चल के घर जाता है. और वही हैविंग वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, our main hurdle getting through to these patients, like telling them कि देखें इसकी treatment है, हमारे पास meningitis के बहुत गर्दन तोड़ बुखार, that is terrifying. like अगर हम किसी patient को बता देते आपको गर्दन तोड़ बुखार है, उनके तो attendants वही रोना धोना शुरू कर देते, and we used to be like no, it's okay, we have treatment options, we can. And yes, those patients recover, walk home. Some may have complications, but 75% if treated properly, they recover. So that is the problem. Like the diseases associated with neurology, I feel scare the general public. So a lot of us have to do a lot of counseling. That's a very big part of what we do, especially I feel in neurology, because we're dealing with things that people do not understand. That is the thing. एब्सोल्युटली. एंड हम जब हम कल अल्जाइमर्स को डिस्कस कर रहे थे स्वेबा, यू नो, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई सेड वाज कि अगर हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के साथ भी अर्ली इंटरवेंशन की बातें कर लें, फॉर एग्जांपल जिनके घरों में जेनेटिकली पार्किंसंस है या उनके परदादा या परनानी को था, तो वी विल गेट इनटू यू नो द डिटेल्स ऑफ इट. बट जनरली इन पाकिस्तान एंड इन क्लिनिक्स, जैसे आपने देखा है, जब लोग आते हैं पार्किंसंस के साथ, तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फराहम होती है, उनको पता होता है, या यू हैव टू टेक देम थ्रू कि पार्किंसंस होता क्या है? So now I would say generally dividing the patients into two groups. Having worked in the public sector, sadly they do not know much. They are scared, they are worried, and if you work in the private sector, yes, they will have obviously use Google to find information, and they will know things that are not important. So we have to kind of like take out the extra information and give them the information that is correct. So I would divide the patient base into two groups. Now the thing in Parkinson's, I'm going to get into Parkinson's, is what we have seen is before Parkinson's, I would divide motor symptoms that affects your motor capabilities of the body and non-motor symptoms. Those non-motor symptoms include things like constipation, loss of smell, difficulty in movement, like turning over in bed. Then there's something called REM behavioral disorder, in which रात को सोते वक्त मुक्के मारते हैं, चीखते हैं लोग, like you know, like उनके attendants उनको लेके आएंगे कि ये तो बहुत aggressive हो जाते हैं सोने में. So these non-motor symptoms often start before the motor symptoms, before the symptoms of Parkinson's become full-fledged in the patients. So I would say anyone who has a family history of Parkinson's or is worried that they might get it, look out for those symptoms. As you said, early intervention. Parkinson's is just not a neurological disease in which हम दवाई दे के बस ठीक कर सकते. There are lots of other things. हम अगर फिजियोथेरेपी, बैलेंस एक्सरसाइजेस, ये सब पहले से शुरू कर दें, तो जो दवाई का फेज है वो बहुत हम डिले कर सकते हैं. Because Rabia, sadly in Parkinson's, there's no treatment. It's giving the medication and controlling the symptoms and keeping the patient as comfortable as possible for as long as possible. There's nothing that we can give him and Parkinson's will disappear. Sadly, abhi tak kuch aisa nahi hai, kahin bhi duniya mein. So that's why and early, and yeah. and
शोएबा जस्ट अ सेकंड, इधर हम लोग अगर समझाएं, क्योंकि जो जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं या जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, राइट, बिल्कुल एंड आई बिल्कुल। नो दैट दिस इज अ रियल फॉर, बिकॉज you're a neurologist and या this is या all you've done इतने सालों या से। या जब हम अपने पेशेंट या क्लाइंट को समझा रहे होते हैं कि देखें ये जो आपके नर्व सेल्स हैं, ये अभी तक डॉक्टर्स नहीं या साइंटिस्ट अभी तक नहीं इन उनको नहीं इन्फॉर्मेशन या वो नहीं जांच पाए हैं कि क्यों मर रहे हैं ये नर्व सेल्स। सो जैसे कि आपने कहा कि कंफर्टेबल बनाना, राइट, हम्म तो यस हम्म आपकी जर्नी काउंसलिंग से शुरू हो रही है, लेकिन जो फियर फैक्टर है उसको आप हम्म किस तरह कंट्रोल या किस तरह उसको कंफर्ट करते हैं? सो हम उनको ये बताते हैं कि देखिए दवाइयाँ हैं विच कैन स्लो इट डाउन, इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो आपके दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन है या आपकी मूवमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, ठीक है। एंड एज वी हैव गॉन अलोंग, न्यू medications आर कमिंग एवरी डे विच मेक्स control of Parkinson's better with lower doses of medication. ठीक है। So firstly I have to tell my patients that why is it happening, पार्किंसंस क्यों हो रहा है। तो मैं आपको पहले बताऊंगी पार्किंसंस दिमाग में हमारा एक डोपामीन जो प्रोड्यूस होती है, एक चीज़ होती है डोपामीन के नाम से। तो जो हमारे न्यूरॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो डिस्ट्रॉय या डीजेनरेट करना शुरू कर दो। अच्छा, पार्किंसंस एक होता है जो सिर्फ हम उसको लेबल कर देते हैं पार्किंसंस कि यू नो इट इज पार्किंसंस डिजीज, बट there can be secondary causes to Parkinson's, that something like this is happening because of something else, a toxin, certain drugs, ठीक है, and also it can be due to secondary to other diseases. Now one thing that I feel in our time has been seen by other neurologists is increase in number of Parkinson's patients and also earlier diagnosis of this disease than previously seen. सो व्हाट एज ग्रुप इज, हम क्या एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? So we have early onset Parkinson's and then we have the regular or late onset. Usually Parkinson's should be seen in 60, I would say 60 and above. And जो early होता है वो 40 पे भी आपको symptoms मिल जाते हैं। जो 60 एंड अबव होते हैं और जो यंग वाले होते हैं ना, द वे टू ट्रीट देम इज टोटली डिफिकल्ट, डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट मीनिंग जो आपने बात की थी कि देयर इज नो ट्रीटमेंट। सो अब वो 40-45 वाला बंदा ही स्टिल एट द पीक ऑफ हिज like you know earning, his life is still very active, you know, so treating him is different and treating the older patient is very different who have retired or are close to retirement. So कैसे उनका डर ख़त्म करते हैं हम उनको, पेशेंट को, we make them feel that the decision making is in their hands when they want to start their medication, till when they want to use things like balance exercises, physiotherapy and non dopamine medication to कंटिन्यू देयर लाइफ। बिकॉज एक दफ़ा हम डोपामीन जो जो दवाई है, ट्रीटमेंट है, डोपामीन की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं ना, देन दे हैव टू स्टे ऑन दैट और वो उसकी डोजेज इंक्रीज ही होती रहती है। तो हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को make them feel that they can make those decisions. It is up to them what they are comfortable with. Explain as much as possible what challenges will be faced to the patient and the caregivers, because the caregivers need to be counseled, and this is something I feel very strongly about, because in Pakistan, and अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो बनने वाला है वो देखे, हमें सिर्फ दवाइयाँ नहीं देनी होती पेशेंट को, हमको उनको भी काउंसल करना है, उनके फैमिली नेटवर्क को भी काउंसल करना है कि कैसे इनको लेके चलना है। बिकॉज आई फील कि दवाई दे के आप शायद पेशेंट को थोड़े दिन के लिए कंफर्टेबल कर देंगे, मगर जो आगे चैलेंजेस हैं उनके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो दैट इज द थिंग, प्रिपेयर देम, एब्सोल्युटली। यू नो, एंड टेल देम इन डिटेल एंड व्हाट शोएबा, ये वाली नेक्स्ट। चीज़ डिटेल में अगर हम इसको लेके चलें थोड़ा सा, बिकॉज आई मीन दिस वाज अ क्वेश्चन दैट हम इसको बाद में टैकल करने वाले थे, बट यू नो इट्स अमेजिंग कि आपने इसको यू ब्रॉट इट अप, बिकॉज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी कंटिन्यू टू डील विद इज कि जब किसी के घर में किसी के
प्यारे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज़ होती है, तो उससे सिर्फ उस इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती, बट उसके एतराफ़ में जितने भी लोग हैं उन सब बिल्कुल की ज़िंदगियाँ बदल बदलती जाती हैं। है। सो जो केयर गिवर जो काउंसलिंग है, जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं या जो घर में रह रहे हैं, we'll get into that later, बट सबसे पहले अगर हम बता सकें कि what are the main symptoms that ओके, पार्किंसंस के शो होने शुरू होते हैं? तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मोटर सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में नज़र आते हैं, और नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं जो शायद आपको नज़र ना आए। तो मोटर सिम्टम्स जिसको हम स्पेसिफिकली एज न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं एंड मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, उसमें एक होता है जो हम उर्दू में कहते हैं रेशा, ट्रेमर। इट्स अ वेरी माइल्ड ट्रेमर इन one part of the body. So Parkinson's is usually it starts on one side of the body. एक side पे होता है, दोनों side पे नहीं शुरू होता है, less likely एक side पे होता है, and we call it an asymmetrical tremor. It's a very fine tremor. When you tell the patient put your hands, you will see a slight जो हम कहते हैं लर्जिश है या रेशा है, जो हम अपने पेशेंट को समझाते हैं। दूसरी चीज़ अकड़न, रिजिडिटी, कि उनकी मूवमेंट्स रिजिड हो जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, चलना फिरना स्लो हो जाता है, आपकी जो गेट है या चलने फिरने की जो आप उनके अटेंडेंट्स उनको बताएंगे कि वो स्लो हो गए हैं, उनके स्टेप्स छोटे हो गए हैं, टर्न करना मुश्किल हो जाता है, बिस्तर में टर्न करना मुश्किल हो जाता है। फिर एक और चीज़, अ लॉट ऑफ देम फील के फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है, वी कॉल इट अ मास्क लाइक फेस, लाइक आपके जो जनरली ना इफ यू जस्ट लाइक स्माइलिंग और सब, वो सब थोड़ा सा टोन डाउन हो जाते हैं। सो पार्किंसंस में आपको लगेगा हर चीज़ नीचे जा रही है, आवाज़ भी कम हो सकती है, फेस पे भी एक्सप्रेशंस कम हो जाएंगे, ब्लिंकिंग आपकी कम हो जाएगी, वॉकिंग स्लो हो जाएगी, थोड़ा सा स्टूप आ जाएगा, अगर आप पेशेंट को लिखवाएंगे उसकी राइटिंग में भी आपको लगेगा छोटी हो गई है। सो ऑल दीज थिंग्स, सो हमारे जो 3 मेन चीज़ें होती है पार्किंसन में, अंग्रेजी में बताऊंगी मगर, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्राडीकाइनेसिया स्लोइंग डाउन, स्लो हो जाना बॉडी का, ये 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती है। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स। एंड नाउ जैसे कि नॉन, आपने बताया, हाँ, नॉन की तरफ। These are motor. Now then the non motor, उसमें आपको क्या क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, आपको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, आपको स्वेटिंग हो सकती है, आपको थोड़ा सा कॉग्निटिव लाइक दिमाग स्लो हो जाता है, चीज़ें प्रोसेस करने में आपकी स्लो हो जाती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, all of these, personality changes. So these are all the non-motor symptoms which are very, and I feel those are more challenging to deal with than the motor symptoms, because the दवाई जो हम दे रहे होते हैं पार्किंसन की, वो मोटर सिम्टम्स को ठीक कर देती है, मगर ये जो दूसरे नॉन मोटर है ना, इनको ट्रीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। या एंड ये जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अपने घर में देख रहा है कि बहुत वेरिएंग इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं या बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं या डिफ़िकल्टी हो रही है खाने पीने में, या एकदम से आपका जस्ट ऑफ द हेड आपकी स्पीच के अंदर कुछ, जैसे आपने बताया कि एक स्लोइंग स्लो डाउन। या स्टिफनेस आ जाती है, स्लोइंग डाउन आ जाती है, तो अमूमन जो केयर गिवर्स होते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इनको, पता नहीं। सो वो जो डिले आता है, अगेन वी गो बैक टू अर्ली इंटरवेंशन, वो जब डिले आ जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल। एट द राइट टाइम, एक तो एज पाकिस्तानीज हम सेल्फ मेडिकेशन में बहुत बिलीव करते हैं बहुत होती कि सेल्फ मेडिकेशन जो है, एंड ये हम पिछले 2 साल से टैकल कर रहे हैं थ्रू शिफाम, है। लोगों को ये बिल्कुल आगाही देना कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, डॉक्टर से रुजू करें, स्पेशलिस्ट से रुजू बिल्कुल करें। तो बिल्कुल। जब अगर आप ये वाले सिम्टम्स जो नॉन मोटर या इनविजिबल सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं नॉन मोटर या मोटर सिम्टम्स, तो प्लीज़ 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 स्पेशलिस्ट लाइक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से रेफ़र करें ताकि वो आपको आगे बता सके। ना सोएबा, इफ़ बिल्कुल। वी अगर हम ये समझना चाहें कि क्या ये सिम्टम्स प्रोग्रेसिवली यूनिक होते हैं, जैसे मुख्तलिफ होते हैं हर इंडिविजुअल के, या अक्रॉस बोर्ड पार्किंसंस के अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं? वेल जो मैंने 3 बेसिक मोटर बताए थे वो तो ट्रेमर आपका हो गया, रिजिडिटी हो गई, आपकी स्लोनेस ऑफ मूवमेंट हो गई, आपकी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वॉकिंग या गेट हो गई, ये तो
pretty much very common होती है, ठीक है. But कुछ लोगों में ट्रेमर मिलेगा, कुछ लोगों में आपको गेट मिलेगा, कुछ लोगों में नॉन मोटर में आपको एक चीज मिलेगी. सो इट इज नॉट, I would say, a uniform thing for everyone. Yes, tremor and the motor symptoms might be in everyone, but again the combination might be different. तो यही बात फिर से आ जाती है, आपके अपने ट्रीटमेंट गोल्स को आपको cater to the patient. You have to tailor it. आपको इस तरह देखना है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वाज अ स्पोर्ट्समैन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ही डेवलप पार्किंसंस, राइट. नाउ ही वाज एडमेंट दैट मैंने दवाई नहीं शुरू करनी है डोपामीन की, बिकॉज वो पढ़ के आया था कि एक दफ़ा शुरू हो जाती है, फिर पेशेंट डोपामीन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड द पेशेंट बिकम्स मिजरेबल. So I was like, okay. He's like, give me something that will help my symptoms and I don't want to go on the medication right now. So for 1 year after diagnosis, we kept him on non-dopamine या जो जिसमें वो dopamine नहीं है medications. हमारे पास वो options हैं और हमने उसको फिजियोथेरेपी रेगुलरली कराई. उसको हम, ही वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो वॉक वगैरह तो वैसे ही करता था. तो उसमें हमने बताया कि बैलेंस एक्सरसाइज करो, ये स्पेसिफिक होगी, ये स्पेसिफिक. So for 1 year we were able to keep him off that medication. Obviously in the end we had to start it. But ये मैं आपको बताया ना, so you have to see what the patient, again, what the patient wants, ठीक है ना, what are his symptoms and then tailor उसी लिहाज से आपको डिसाइड करना है इसके लिए क्या ठीक है. और एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ, पार्किंसन, जो सेकेंडरी पार्किंसन जो हम कहते हैं, जिसमें कॉज होता है, a lot of people will start the medication, send the patient home and not think कि भाई कोई कॉज है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, कोई ड्रग है जो कॉज कर रही है. lot of your psychiatric medications, mood stabilizers, they cause Parkinson's. So I'm just giving examples कि आपको सोचना भी है पीछे कि ये सिर्फ सिंपल पार्किंसंस है या एक सेकेंडरी कॉज है, जिस कॉज को आप ठीक करेंगे तो ये सिम्टम्स भी खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे. तो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है. That's the thing. बिल्कुल. एंड स्वेबा, अगर हम जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक्स या डायग्नोसिस की, एंड आई नो दैट ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको आप क्लिनिकली जांचती हैं, इसको यू हैव योर चेकलिस्ट, लेकिन आर देयर एनी टेस्ट फॉर इन्वॉल्व्ड इन द डायग्नोस्टिक्स फॉर पार्किंसंस? Of course there are tests, because we have to exclude, as I said, the secondary causes. तो हमको दूसरे टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक यंग पेशेंट आ रहा है विद पार्किंसंस, तो मैं देखूंगी कोई टॉक्सिन एक्सपोजर है, कोई पेस्टिसाइड एक्सपोजर है, कोई ड्रग तो नहीं वो ले रहा, ठीक है. फिर हमारे पास कुछ यंग में डिजीजेज होती हैं विच मिमिक पार्किंसंस. दे आर मूवमेंट डिसऑर्डर्स, हाथ पैर चलना, पेशेंट का स्लो हो जाना, बच्चा बिल्कुल सही पढ़ रहा है स्कूल में, फिर एकदम से स्कूल में नहीं पढ़ रहा. तो उसका मैं एग्जांपल दूंगी, विल्सन्स डिजीज है, उसमें कॉपर डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, तो उसको एक्सक्लूड करना होता है हमने. तो उसके लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू गेट द कॉपर स्टडीज डन, वी हैव टू गेट एन MRI डन ऑफ द ब्रेन. सो यस, Parkinson's is diagnosed on clinical symptoms, but we have to get the testing done to make sure that the secondary causes are excluded. We have something called vascular Parkinson's, which is seen in old patients because of multiple small infarcts in the brain. That has caused the Parkinson's, not the regular thing. So इन चीज़ों के लिए of course हमें टेस्ट कराने हैं, खून के कुछ टेस्ट होते हैं, दिमाग का MRI होता है, ये तो कराना बहुत ज़रूरी होता है, just to exclude those causes. बिल्कुल. एंड जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट, अब when we are talking about जो clients या patients आपके पास आ रहे हैं आपके क्लिनिक में, right? कुछ शो जेनेटिक सिम्टम्स के उनके घर में या उनकी जीन्स में ये डिजीज़ या डिसऑर्डर चल रहा है, एंड देन सम अपीयर रैंडम, उनको कभी भी नहीं पता था कि किसी के घर में है या नहीं है या जो भी है. नाउ इज देयर अ वेरिएशन, इज देयर अ डिफरेंस इन इट, एंड जिनको पता है कि जिनके घर में है वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू बैटल एंड पुश फॉरवर्ड अपनी जो ज़िंदगी की जो फंक्शनैलिटी है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? Okay, so Parkinson's, as I said, yes, there are certain genes which have been mapped which can lead to Parkinson's later. There are genetic studies and all that. So अगर आपके family में है तो you're more likely to get it too. But that's not like a definite thing. ज़रूरी नहीं है कि आपको वो हो, मगर chances बढ़ जाते हैं बिल्कुल.
तो आपको फिर वो चीज़ दिमाग में रखी है, यू हैव टू वॉच आउट फॉर सिम्टम्स. एंड आई टेल दोज पेशेंट्स कि अभी से वरी करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, वाई थिंक, बट stay active, very important. Keep your brain active, very important. And look out for the symptoms. As we discussed, early intervention, it really really helps. Also, I want to say over here that अगर किसी पेशेंट लाइक किसी पेशेंट को पता है कि उसके ख़ानदान में होना, उसको प्लीज़ परेशान नहीं करें. उनको प्लीज़ ये नहीं करें कि ये 10 टेस्ट आप करा लें. नहीं, हाँ, अगर सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, then we can go forward. Otherwise, I think it's just stressing out, the family more. And I also feel that, as I said, it's got a family connection, but it has, no cause also. कि बस हो गया, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हो गया. एंड देन द सेकेंडरी कॉजेज वो भी हैं. तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में बिठानी है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, वी कीप एन आई ऑन द अदर बच्चे इन द नेक्स्ट जनरेशन, बट वी एक्सप्लेन टू देम कि ज़रूरी नहीं है उनको. दैट्स द थिंग. And symptoms and signs don't differ. They are more So we or have less. a couple of questions in. Yeah, Yeah, I'm just go saying. The Yeah, symptoms and symptoms and signs don't signs differ. don't differ a lot. They pretty much overlap. Yeah. ठीक है, हमारे पास 2-3 सवाल हैं, शोभा, if you'd like to take them. One Yeah, is, sure. can you please tell us कि ये कितनी जल्दी डिटीरिएट करती है डिजीज अगर 60s में हो? ओके, सो द थिंग इज कि अगर आपने अर्ली इंटरवेंशन करी है, अगर आपने सही दवाई सही टाइम पे शुरू की है, अगर आप उनको सही फिजियोथेरेपी, बैलेंस एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, उनके नॉन मोटर सिम्टम्स को लेके चल रहे हैं, उनका डिप्रेशन ट्रीट कर रहे हैं, तो इट कैन. I know patients who stay on a very nominal dose of medications for 5-6 years, and then we have to increase it. But having said that, यहाँ मैं अब आई डोंट नो अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, मगर ये तो हम पार्किंसन बेसिक जो पार्किंसन डिस्कस करें, कुछ हमारे पास होती है पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स. They're a little different from Parkinson's. Now, sadly, those are not very treatable and they progress faster. Now, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. I hope this answers the question. आपके पास 60 वाला पेशेंट आएगा, आपने उसको पार्किंसंस डायग्नोज कर दिया, उसको ट्रेमर है, थोड़ा सा वो स्लो है, 4-5 साल वो दवाई पे सही चलेगा, मगर इसको अगर 1 साल में गिरना शुरू हो जाए, ठीक है, और उसके सिम्टम्स बहुत अग्रेसिवली ख़राब हो रहे हैं, वो ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, then you have to think about Parkinson plus syndrome. Then this is not simple Parkinson's. So you see, there are lots of things that you have to keep in mind when you're treating this disease. तो आपका जो रेगुलर है वो तो चलता रहेगा, 4-5 साल आप कंफर्टेबली भी गुजार सकते हैं. और एक और चीज़ जो हमारे पास एक ऑप्शन है, जो पाकिस्तान में अभी बहुत फुल फ्लेज नहीं हुआ है मगर होता है, एंड वी हैव अ टीम फ्रॉम abroad coming in, and he's a very good doctor. I've met with him also. DBS, deep brain stimulation. Now this, Rabi, I don't know if you had this question in the following thing. Should I just discuss it here, or shall we come back We did. to this? Please do. Okay. No, not So at all. now DBS, deep brain stimulation, is something that we can get done to the younger patients who, I mean, not necessarily younger, but usually we look at like a 50 to 65 age range who have responded well. Thank you for saying that 50 to 60 is young, because हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. Yeah, I mean, देखिए, very honestly, आप 50 to 60 में लोग फिर भी काम कर रहे होते हैं. They're still very active in आजकल के ज़माने में. So, why not call them young? But okay, so deep brain Absolutely. stimulation. So we look at 2-3 things that they should respond well to treatment for the last 4-5 years, confirm that it is Parkinson's and not Parkinson's plus, and they should be cognitively, mentally well, because we need a positive mindset for this to be successful. Someone who's depressed, someone who's anxious, someone who is not very
uh, proactive about their disease, it's difficult because this requires a little bit of technicality. So yes, that is an option, and we have seen like lot of success with deep brain stimulation. आपकी drugs भी कम हो जाती हैं and you're symptom free for a longer period of time. Of course, having said that, it's not the treatment, but वो quality of life improves if you are like at a pace that at a time that आप काम कर रहे हैं, आपका career बन रहा है, so maybe doing this will help you just continue working more actively. You know, that is one other option that you have. एंड स्वैबा, अगर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता सकें कि व्हाट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व या इनटेल, So कि it is जो जो पेशेंट है उसके साथ उसके लिए क्या किया जाता है टू प्रोवाइड दिस थेरेप्यूटिक इंडक्शन. obviously they have to fit in जो कुछ requirements जो मैंने कुछ तो बताई हैं आपको, you have to fit in those requirements. जी Secondly, जी so it's like electrodes होते हैं, like you know, kind of they go inside the brain and you place them there, they are placed there, and it's connected to a battery outside, and it stimulates those areas. Basically what is happening in Parkinson's कि आपकी जो stimulation है वो कम हो रही है because of dopamine depletion, तो वो it acts to stimulate those areas. So you have something inside your brain connected outside, and you can control that stimulation with the thing outside. अब I will not go into the details because वो किस जगह में होगा तो कौन सी symptom ठीक होगा, but that is your basic बिल्कुल. thing. Go in, you put something in, and it's connected outside, and it kind of triggers or stimulates the brain. So that is the thing. एब्सोल्युटली. एंड अगेन, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम समझते हैं कि दिमाग का वर्ड आता है तो देयर इज सो मच ऑफ एम्बिग्विटी, देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी. Yeah. यू नो, इट्स इंटरेस्टिंग कि जो हमारा खौफ, हमारा डर होता है, वो वैसे ही डॉक्टर का नाम सुन के होता है. सो प्लीज़ अपने दिलों में से ये खौफ निकालें, बिकॉज Please. अननोन रहेंगे, वो वो बढ़ते जाएंगे सिम्टम्स. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, स्वैबा, इफ यूड लाइक टू टेक इट. द क्वेश्चन Yeah, इज, yeah, मेरे definitely. फादर 65 के हैं, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन पिछले साल से, कोविड के बाद से, मैं नोटिस कर रही हूँ कि उनके नेक में एक थोड़ा सा शेक या वो हिलते रहते हैं, लेफ्ट साइड पे, एक ही साइड पे मूव करते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़ा मूव करते रहते हैं. और जब उनको मैं कॉन्शियसली अवेयर कर दूं तो ही स्टॉप्स. How can I, he is in denial, how can I get him to visit a specialist? So maybe a lot of patients who the children who bring their patients to me, they just tell their parents that this is a general checkup and we just want to make sure if they have sugar that sugar is okay. They don't tell them that they're bringing them to a neurologist because the fear. So it's like, you know, it's like a general checkup. So I hope and I pray that you go to a doctor who is cooperative and will cater to that thing, because I try not to scare the patient. तो आप बिल्कुल देखिए, एक और ट्रेमर होता है जो बहुत ही it's not going to cause any problem, senile tremors that age related, वो हल्का सा सर में थोड़ा सा हिलना हो जाता है, तो वो भी होते हैं, and there's nothing you need to do about it. That's nothing, कोई इतना scary नहीं होता. फिर एक और type of tremor होता है, essential tremor. It's called it's separate from Parkinson's, and it usually has a positive family history, like if the grandfather had it, yeah, the nani had it, the dadi had it, you will see it. So उसको भी आपने exclude कर सकते हैं. तो ये 2-3 ट्रेमर्स हैं जो अगर ओल्ड एज में हमें मिल सकते हैं, विच मे नॉट बी नेसेसरली पार्किंसन, और अगर वो सीनाइल है या एसेंशियल है, उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, एंड देन इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. बट आई वुड सजेस्ट गेट इट चेक्ड, गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड टेल योर, आई मीन उनको नहीं लाइक जस्ट टेल देम कि हम जनरल चेकअप के लिए जा रहे हैं और ये चीज़ चेक करा के आप आ जाएं. I mean, it's difficult. And एक और चीज़ मैंने जो बिल्कुल देखी sadly कि you know जी. some of the attendants children, they don't understand कि क्या हो रहा है इनको, ये क्यों slow हो गए, ये क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे, and I have to really explain it to them कि देखें, they have a problem. It's not as if they're doing it out of, you know, like होता है ना old age में, they want attention, they feel ignored, so the children assume that it's one of those attention seeking behavior kind of thing. No, it's not that. Like I have seen, you know, children getting frustrated with their parents, and I understand you have seen your parents so active and ekdam se you see that they cannot do much, but you know, it's a problem they have, and
You need to make sure that they feel they are in control of क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में. उनके पास कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो कंट्रोल उनसे ले लिया जाए ना, दैट इज़ वेयर मसले शुरू हो जाते हैं. तो प्लीज़ उनको कहें कि नहीं, ये और आपका स्लोइंग. डिसीजन, ये आप डिसाइड करेंगे आपको कैसे लेके चलना है. बिल्कुल. एंड स्वेबा, हम इसके बारे में पहले बात कर रहे थे, सपोर्टिंग नॉट जस्ट द पेशेंट बट सपोर्टिंग द एंटायर फैमिली स्ट्रक्चर. एंड essentially कुछ साल पहले तक support groups were not that easily available, लेकिन अब मैं safely कह सकती हूँ कि with the support of the with the practitioner, जो specialist होता है या doctor होता है, उनके support से there are groups actively Facebook Instagram पे there are active groups also. जिनको नहीं भी पता, आ खान में हर थर्स हर पहला थर्सडे ऑफ द मंथ थर्सडे, एक पार्किंसन बिल्कुल, सपोर्ट ग्रुप होता है. बिल्कुल, बिल्कुल. एंड यू नो, बहुत बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके एक प्यारे को पार्किंसंस वो उनकी ज़िंदगी में एंटर हो चुका है, तो वो आप सबकी ज़िंदगियों में एंटर हो गया है, तो आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म करें, आप अटेंड करें वो सेमिनार, वो बिल्कुल. सपोर्ट ग्रुप, एंड देन स्लोली स्लोली स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग एवरीबडी एल्स. एंड जैसे कि स्वेबा ने बताया कि स्पेशलिस्ट का काम जो है वो पहले काउंसलर का होता है और फिर डॉक्टर का. तो स्वेबा, जैसे कि आपने बताया कि लेट द पेशेंट बी इन कंट्रोल, लेट देम बी ऑल्सो, उनको पेशेंट के नज़रिए से देखा जाए या उनको एक बिल्कुल नॉर्म इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें कि नाउ दिस इज़ देयर एंड इट इज़ वी हैव टू लिव विद इट. सो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? So accepting your diagnosis is very important, because अगर पेशेंट डिनाइल में है तो वो ना तो दवाई लेगा, ना तो वो आपकी जो भी आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, वो नहीं सुनेगा. तो पेशेंट एंड ऑल्सो द केयर गिवर नीड्स टू accept the diagnosis कि this is it, Parkinson as you said has entered our lives. एंड सैडली न्यूरोलॉजी में बहुत सारी डिजीजेज हैं जो एक क्रॉनिक कोर्स होता है, वो चलती चली जाएंगी और उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बस वो चलता चला जाएगा सैडली. तो ये चीज़ है कि मेंटली प्रिपेयर करो, उनको डायग्नोसिस एक्सेप्ट करवाओ और इनको समझाओ कि देखिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, स्पेशली इफ़ यू कम अर्ली इन द डिजीज़, to keep you comfortable, to maintain a specific quality of life that will keep you comfortable. It is very possible. We have lots of patients who are doing fine. मगर yes, उनको फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर करना है. Sweba, if you can hear me, we lost you. आपकी आवाज़ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने पे चली गई है. इफ़ यू कैन हियर मी, एंड आई ट्रस्ट स्वेबा इज़ गोइंग टू जॉइन अस बैक एज सून एज उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होती है. स्वेबा और मैं, डॉक्टर स्वेबा और मैं डिस्कस कर रहे थे पार्किंसंस डिजीज़, उसके साइंस, उसके सिम्टम्स, उसकी स्पेशल केयर. एंड जैसे कि और बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़ होते हैं, इस डिज़ीज़ के साथ भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं. और इन्हीं को लेके चल के अगर आपको कोई कोई नोटिसेबल फील्स हो रहे हैं या कोई साइंस मिल रहे हैं, तो ज़रूर अपने प्यारे की जनरल चेकअप करवाइए ताकि पता चल जाए कि क्या हो रहा है उनके साथ. We are just waiting. Sweba is going to join us as soon as um, she is back with us. एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि वन हेल्थ और शिफाम दोनों बहुत 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 सर जोड़ के काम कर रहे हैं, एंड वो आपको ये लेके आ रहे हैं फ्री वाउचर्स. देयर आर really really good because sorry, I'm just going to go back. We are still waiting for Dr. Sweba.
एंड मैं आपको उतनी देर में इन वाउचर्स का बताती चलूँ। ये वाउचर्स अवेलेबल हैं, आप सितंबर तक अवेलेबल हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी डिफिशेंसी के लिए आप टेस्टिंग करा सकते हैं 50% डिस्काउंट पे, एंड फ्री कैल्शियम टेस्ट एंड होम सैम्पल कलेक्शन। एंड होम सैम्पल कलेक्शन के लिए you can call 0304 111 7428. And ये जब इंटरेस्टिंगली इनफ ये जब आते हैं आपके लिए वाउचर्स के डायबिटीज़ के लिए टेस्टिंग करवाएं, अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, अपने विटामिन डी टेस्ट कराएं, तो प्लीज़ 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 अवेल दीज बिकॉज ये मिल रही हैं आपको, आपको फराहम हो रही हैं। सो कॉल 0304 111 7428 एंड आप शफाम से भी रुजू कर सकते हैं ताकि आपको ये फ्री वाउचर्स एट डिस्काउंटेड रेट्स मिल सकें। So let's add Sweba with us on stream. Sweba, I don't know if you can hear. And we trust that Sweba will join us as soon as उनकी connectivity वापस आती है. So let's just give her a couple of minutes and hope that she joins us back. हम बात कर रहे हैं अबाउट पार्किंसंस, उसके साइंस, उसके सिम्टम्स, उसकी स्पेशल केयर। हमने ये भी बात की कि एज़ पाकिस्तानीज़ हम डर जाते हैं दिमाग के डॉक्टर के नाम से, हम डर जाते हैं ये सुन के कि क्या मेरे साथ क्या होने वाला है, एंड दैट फियर के साथ और बहुत सारी चीज़ें एडेड होती हैं। Sorry, I got something went wrong with Sweba, my जी। दैट्स फाइन, यू आर बैक विद अस। आप हमें बता रही थी, थैंक यू सो मच जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं बैकग्राउंड में। I am so not technically sound. Yeah, it's my husband, by the way, so it's okay. It's good. It's good. Hello husband. थैंक So यू, I was आपने saying, डॉक्टर सोहेबा को दोबारा कनेक्ट कर दिया हमें। सोहेबा आपकी बहुत ही अच्छी पोज में आप दोबारा फ्रीज हो गई हैं, सो होपिंग यू आर I'm बैक back. विद अस। So I think we'll wrap this up quickly. There's something wrong with the internet on my side. So basically, you have to prepare them, especially the caregivers, for future challenges. Little things like putting a ramp, putting handles in the bathroom. You have to change the environment to make them comfortable because their motility, unki chalna phirna will be affected. Also, I do believe Dr. Sweba experience कर रही हैं technical difficulty. Sweba, you are freezing for us again. Just letting you know if you can hear me. now is it okay? It is I'm so better. sorry. I am so sorry about this. It's fine. Uh, Please don't तो be sorry. ये हमारे तो फ्यूचर के लिए आपने अपने आप को और अपने घर को और अपने पेशेंट के एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना है। ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज जैसे मैंने बताया राबिया इस अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ठीक है। आप 4 to 5 years 10 years कंफर्ट में गुजारते हैं, बट इन द एंड सॉरी टू से वो चीज़ इट टेक्स ओवर योर लाइफ। and I guess what Dr. Sweba is also trying to say is कि वो ये जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसका कोई क्योर नहीं होता, उसको मैनेज किया जा सकता है, आपकी फंक्शनैलिटी, आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करा जा सकता है। तो हार नहीं माने बिकॉज वी नेवर नो वेयर साइंटिफिक एंड मेडिसिन टेक्स अस एंड क्या प्रोग्रेस हो। सो it's unfortunate that Dr. Sweba lost internet connectivity, but I do want to say thank you so much, Dr. Sweba. आपने अपना वक्त निकाला हमारे साथ संडे गुजारने का, and I wish कि all of you जिनको पता चल रहे हैं, जैसे स्वेबा ने राहत के लिए बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये बताया कि
not all tremors can be Parkinson's. So आप अपने father के जो tremor हो रहा है उनको देखें, because it could be something else and it can be treated through medication or better health, better self-care. So thank you so much. I shall see you next Sunday, same time. Khuda Hafiz.